students. So in this video we will talk about force, which is a subtopic of laws of motion. Start करते हैं force के basic definition से. जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है तो जब भी आप बाहर से उसको पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो या फिर एक्सटर्नली उसको धक्का दे रहे हो, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्टेट है, इट कैन बी एट रेस्ट और इट कैन बी एट मोशन, वो चेंज हो सकता है. When we are talking about rigid object means जब आप बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस करके इसकी जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकते. तो इन केस ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन बी डिफाइंड as the external influence that can cause the change of its state of rest or state of motion. अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और आप बाहर से फोर्स दे रहे हो, that means it started moving with certain velocity in a certain direction. और अगर आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और आप बाहर से फोर्स दे रहे हो, that force will change the velocity or can change the direction of movement. और जब हम लोग बात करें नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट का, नॉन रिजिड ऑब्जेक्ट मीन्स फॉर एग्जांपल मड, जिसका शेप चेंज हो सकता है. तो जब भी हम लोग बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पुश, पुल और ट्विस्ट, इसकी जो शेप है दैट कैन चेंज, एज वेल एज अगर आप उसके बाद भी फोर्स अप्लाई करते हो तो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन है दैट कैन चेंज. So force is nothing but an influence or external influence that causes the object to undergo certain change of speed, certain change in direction or change in shape. Now mathematically कैसे इसको define करना है? Force is nothing but product of mass into acceleration, and as we know the acceleration is a vector quantity, so obviously force is a vector quantity too. Now what are the units of it? In SI, unit of force is Newton और CGS में force का unit है dyne. Now what is the basic relationship in between those? 1 Newton can be marked as 10 to the power 5 dyne. Now coming to the next part, that is what are the types of forces. There are 4 basic types of forces. The force can be gravitational force, it can be electromagnetic force, it can be strong nuclear force and weak nuclear force. Let us start with nuclear force. Nuclear force can be of 2 types, strong nuclear force and weak nuclear force. Strong nuclear force क्या है? Strong nuclear force है जो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करने के लिए हेल्प कर रहा है. As we all know, neutrons are neutral. That means there are no charge in between neutrons, but protons are positive. So बहुत सारे प्रोटॉन को अगर हमें न्यूक्लियस के अंदर रखना है और न्यूक्लियस का जो साइज है वो है 10 to the power -15 मीटर के रेंज में, तो अगर हमें वहां पे रखना है तो that means we are keeping huge amount of positive charge within a very short range. And as we all know, same charges repel each other. That means protons that tends to repel each other. But this is not the actual case. That means there is a holding force that kept all the protons and neutrons together in the nucleus. So this is the most basic and most strongest force in nature. इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को. और इसका रेंज क्या है? ऑब्वियसली ये बस न्यूट्रॉन तक ही काम कर रहा है, तो इसका रेंज है 10 to the power -15 मीटर में. तो अगर आप इसको एज इफ बोलो कि 1 मीटर रेंज में काम करता है, 2 मीटर रेंज, 1 मिलीमीटर रेंज, नो, इट ओनली एक्ट इन 10 to the power -15 मीटर ऑफ रेंज. Next, coming to the weak nuclear force. Weak nuclear force is a force that allows the proton to change into neutron or neutron to proton. That means अगर कभी भी किसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इम्बैलेंस हो रहा है, तो टू मेक द प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इट, कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर अगर किसी में न्यूट्रॉन्स ज्यादा है प्रोटॉन से, एंड टू कीप द प्रॉपर प्रोपोर्शन न्यूट्रॉन्स कुछ प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बीटा डीके और एंटी बीटा डीके. This is where the weak nuclear force comes into act. तो weak nuclear force ही है जो अलाउ करता है प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने में और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट होने में. And obviously this force will also act within a short range, that is 10 to the power -15 meter range. Now coming to the next zone, that is the electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? जैसे कि हमें पता है अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड है, दे विल रिपेल ईच अदर. और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को विद इन विसिनिटी रखते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, they will attract each other. So the force acting between two charged particles, or you can say two electrons, two protons, one electron, one proton, is termed as electric force or electrostatic forces. And when we are talking about force acting between two magnetic poles or force acting between two current conducting wire, then the force is known as magnetic force. In total, अगर हम इन दोनों को मिला दें, the combination of electrostatic and magnetic force is termed as electromagnetic force. यहाँ पे बेसिक रूल क्या है? यहाँ का बेसिक रूल ये है कि जब भी हम लोग बोलेंगे कि हम सेम टाइप के पोल्स या सेम टाइप के चार्जेस की बात करें, then the force will be repulsive. और जब जब हम लोग बात करेंगे कि unlike charges, unlike poles, that means south pole, north pole, or positive charge, negative charge, then the force will be attractive. It is strong compared to the gravitational force, but very weaker compared to the nuclear forces. और इसका रेंज क्या है? As we know कि अगर हम लोग दो मैग्नेट को some certain millimeter की रेंज में भी different distance रखें, तो there will be a force. That means इसका जो रेंज है वो और 10 to the power -15 रेंज में नहीं है. That is quite high. So this is the main combination of electrostatic and magnetic forces. It follows the inverse square rule. Let me just write down that rule for you. Inverse square law, both electric and magnetic force follows that, and this says that force is inversely proportional to the distance between those poles or distance between those charges. Now coming to the most basic force that we all know, this is the gravitational force. Gravitational force क्या है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट, as we all know, हर एक ऑब्जेक्ट में मास होता है. Due to the virtue of mass, they started attracting each other. इस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर लेट अस से वी डू हैव टू ऑब्जेक्ट, वन इज मास m1 and other has mass m2 and the distance between them is r, then the gravitational force, let me mark it as Fg, it is proportional to m1 m2. Fg is again proportional to 1 by r square. That means it is also varies the inverse square law. Then in total we can say Fg is proportional to m1 m2 divided by r square, or Fg can be written as G into m1 m2 by r square. This is Newton's gravitational law, where G is nothing but universal gravitational constant. Now let us come to few more common forces. When we are talking about mechanics, we used to use this kind of forces or the terms to define certain forces. So let us start with the first thing, which is weight. What do we mean by weight? Weight means कितने force से या फिर कितना force of gravity is acting upon a body. Let us say the body do has a mass which is m. Then we will say the weight will be m into g. Now let us come to the next thing, that what is normal force. Let us say कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस के ऊपर बैठा है, तो अगर आप इस सरफेस के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, then there is a force, that is weight, which is acting downward. But as we know कि ये ऑब्जेक्ट जब आप सरफेस के ऊपर रख रहे हो, सिर्फ डाउनवर्ड फोर्स अगर काम करता है, then it will come down, but it is not coming down. That means there is another force which is balancing this weight, and that force is termed as reaction force or normal force. Usually it can be marked as R, or it can be denoted by N also. So we can say that R is equal to weight of the object, that is equal to mg. That means it is defined by the force that the surface employs on the body. Next, come to the tension force. Let us say tension force, let us say we do have a rope which is connected to a rigid support, and in other end we do have a weight, we do have a mass attached with it. As we do have a mass attached with a rope, तो नीचे के डायरेक्शन में वेट काम करेगा, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे तो नहीं आ रहा है, दैट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट. दैट मींस इस वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, तो ये जो फोर्स बैलेंस कर रहा है, दैट इज माय टेंशन. So tension is the force which is transmitted by the cable or rope or the string or where whichever is attached in the opposite direction of weight. So T is also equal to mg here. It can change. Let us say if we are talking about that
we have displaced the rope up to this portion, then obviously my tension is not equals to T. For this picture one, say this is my figure one. So for figure one, it is mg, and if it is makes an angle theta, then this will be theta 2, and this component becomes mg theta. So for figure 2, it is T is equal to mg cos theta for figure 2. Now coming to the next term, that is spring force. जब भी हम लोग एक स्प्रिंग को इलोंगेट करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है उसके अंदर. That restoring force is known as spring force, and that force is dependent on the amount of displacement that you have made. अगर आपका compression या फिर expansion जो है वो x है, then your force is directly proportional to that x, and the negative sign only means the force is restoring. जिस डायरेक्शन में आपने कंप्रेस या फिर elongate किया है, जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है. Or we can also write it as F is equal to minus kx. Last thing, that is a frictional force. Frictional force क्या है? जब भी आप किसी एक rough surface के ऊपर से जा रहे हो, the rough surface will always try to stop your motion. So as it always tries to stop your motion, that force which is offered by the surface to the moving object is known as frictional force. तो फ्रिक्शनल फोर्स को यूजुअली हम लोग स्मॉल एफ से डिफाइन करते थे. एंड on which factor does it depend? Frictional force depends upon reaction force or the normal force, or it can be written as F is equal to mu into R, where mu is the coefficient of friction. This is everything or every terms you need to know about the term force.